we are here to present our play on a very famous case of cannibalism, where Surinder Koli, who was the servant of Moninder Singh Pandher, are the two main accused of the Nithari case. Back in 2006, disappearing of children and women from Noida Sector 3 made national headlines. This wasn't a thing for the residents, common thing for the residents of this place. People of Noida were terrified by this accident, which were occurring continuously for the pace of 2 years. Facts will go on. नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। मैं सुमित गौरव आपका स्वागत करते हैं इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन न्यूज़ में। आज हम नोएडा डिस्ट्रिक्ट से सीधे प्रसारण करते हुए इस इलाके में हो रही इंसानियत और शर्मसार कर देने वाली घटना के बारे में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विक्टिम के पिता से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नंदलाल है। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आपके साथ क्या हुआ है? हम लोग यहाँ पिछले 9 साल से रह रहे हैं और हमारी बेटी पिछले 1 साल से गायब है, मगर प्रशासन क्या करे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी बेटी के बारे में क्या कहना है प्रशासन का? जी, पुलिस ने तो अभी कोई केस ही नहीं दर्ज किया है। हमारी बेटी पिछले 1 साल से गायब है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं कि आपकी बेटी भाग गई, और यही बात बोल के और मेरे को भगा देते हैं और बोलते हैं कि बिना उसके हम केस कैसे ले लें। तो आप पुलिस के इस बर्ताव के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की, और कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है? हम बहुत गरीब हैं भाई साहब, हम बहुत गरीब हैं। हम गरीबों की कौन सुनता है? ना पुलिस वाले, ना कोर्ट, ना कचहरी। इस इंसानियत और शर्मनाक कर देने वाली घटना से कोई और भी पीड़ित है? हमारे यहाँ कुल 18 केस हुए थे जो D5 नाम की कोठी से बरामद हुए थे, लेकिन अभी तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो पुलिस ने यहाँ जांच पड़ताल नहीं किया क्या? सबके बच्चे ऐसे गायब हो रहे हैं वहाँ से। हमारी लड़की को तो हमने रिक्शे पे बैठाया था और उसको भेजा था, मगर वो तो रिक्शा वाला बोलता है कि D5 कोठी पे उतारे थे और पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस ना कोई कार्रवाई करती है ना कोई केस दर्ज करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसका केस दर्ज भी नहीं किया था। D5 की कोठी से क्या क्या राज छुपे हैं, देखते रहिए हमारे साथ इंडियन लीगल रिसर्च फाउंडेशन। As the guardian of these missing victims were not satisfied with police probe, after several requests and pleading, the court finally approved to look into this serious matter. Later, the court intervention made the police to form a special team. They tracked Koli, who was a servant in a wealthy house. This house belonged to Moninder Singh. The police summoned Koli. After 60 days of custody, Koli confessed in front of police in presence of magistrate. Confession. तो भाई, हमारे यहाँ में तो पायल का लास्ट सिम नेटवर्क पकड़ा गया था, उसके बाद क्या किया? पायल? कौन पायल? मैं नहीं जानता किसी पायल को। सीधे बता रहे हो तुम क्या? सर मैं बताता हूँ सर मेरे मालिक उसे फ़ोन करके कभी कभी बुलाया करते थे, और वो उसे 25,000 रुपये भी दिया करते थे कभी कभी। ये सब सर मैं बस देखता था सर, छुप के बस देखता था सर। फिर क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। एक दिन मैंने उसे बोला कि आओ, एक क्लाइंट आपसे मिलने आ रहा है। वो मेरे फ्लैट पे आई थी सर, तो मैंने उसे चाय बना करके पिलाया, और उसके बाद उसे बोला कि थोड़ा सा मुझे इंटरटेन कर दो। इसके लिए मैंने उसे 500 रुपये भी देने का वादा किया था, बट वो मानी नहीं, और मुझे बहुत बुरी तरीके से बोला। मुझे ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और मैंने उसे उसी के पल्लू से उसे मार डाला सर। फिर सर मैंने मारने के बाद ऊपर बाथरूम में ले जा करके उसके बॉडी के पीस किए और एक पॉलीथीन बैग में पैक करके सामने वाली नदी में फेंक दिया सर। फिर बच्चों का क्या किया? सर बच्चों का क्या किया? सर मैंने उन्हें कुक करके खा लिया सर। इंसान हो या जानवर? सर After initial probe by the local police, the investigation was handed over to the CBI, where 16 cases were filed against Koli, in all of them for murder,
abduction, and rape, besides destruction of evidences, and Pradhan was booked for immoral trafficking. The accused appealed in the High Court of Allahabad. The proceedings in the said case are as follows. I invite bench Justice Ashwini Kumar Mishra and Justice Syed Aftab Rizvi for the proceedings. Counsel on behalf of the petitioner. With the permission of the bench, I would like to proceed. Much obliged. According to Section 24 of Indian Evidence Act, the statement should not be considered as confession. The convict made the confession to the magistrate in the presence of police after 60 days of custody, after which police started digging the nearby land and discovered the children's body. The convict asserted that the police tortured him to confess all kinds of information, including the name and the manner of killing the victims. But in reality, police had tortured the convict to confess the false information in order to protect his own life. The convict is a mental patient who needs a doctor, not the capital punishment after the trauma he underwent in the custody. I would like to conclude my argument by stating that this is the one of the most rarest to rare case and would like to request to consider my argument. Counsel on behalf of the respondent. With the permission of the bench, I would like to proceed. Much obliged. There was a confession made by the convict before the magistrate under section 164 of the CRPC. It was a volunteer confession, even though the magistrate repeatedly consoled the convict that he was not bound to make any statement it can be read against him. As mentioned under the Article 21 of the Constitution, the crimes committed by the accused directly violate the constitutional rights of the victim. According to the facts of the case, it does not leave any doubt that the appellant has committed horrifying and barbaric killing of the innocent children. This case revolves in the category of the rarest of the rare case, where the concept of cannibalism is also being highlighted. I would like to conclude my argument by stating that the order deems fit in the interest of justice, equity, and good conscience. Final judgment. Upon evaluation of the evidence laid in this case on the touchstone of the fair trial guaranteed to an accused under Article 21 of the Constitution of India, we hold that prosecution has failed to prove the guilt of accused Surinder Koli and Pandher beyond reasonable doubt on the settlement of parameter of a case based on circumstantial evidence. The conviction and sentence of accused Surinder Koli and Pandher, white judgment and order passed by the court below in session trial number 440 of 2007, dated 24 July 2017, is reversed. Capital Criminal Appeal number 5183 of 2017 and 4404 of 2017 are allowed, and the reference number 10 of 2017 is answered accordingly. The accused appellants Surinder Koli and Pandher shall be released on compliance of Section 437A of CRPC, provided that they are not required in any other case. We conclude holding that a fair trial has clearly eluded the accused appellants in this case. The need to have a fair trial has recently been emphasized by the Supreme Court in Munna Pandey v. State of Bihar 2023. While referring to the statement by Harry Brown, the court endorsed the view that a fair trial is one in which the rule of evidence are honored. Accused has competent counsel and the judge enforces the proper courtroom procedures, a trial in which every assumption can be challenged.